लड़की से दोस्ती पर दो परिवारों में बवाल, जिम ट्रेनर को घर से उठाकर पीटा, लव जिहाद का आरोप। कर्नाटक के हुबली शहर में एक 23 वर्षीय जिम ट्रेनर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक लड़की के साथ रिश्ते को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने युवक को कथित तौर पर अगवा किया और फिर उसके साथ मारपीट की। घायल युवक की पहचान समीर मुल्ला के रूप में हुई है। समीर का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि ये मामला दो परिवारों के बीच का आपसी झगड़ा है। हुबली के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि कुछ संगठन इस घटना को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, जो गलत है। पुलिस की जांच में सामने आया कि विवाद की जड़ समीर और एक लड़की के बीच का प्रेम संबंध है। लड़की के परिवार वाले समीर के घर उसे डराने धमकाने पहुंचे थे। इसी दौरान समीर के परिवार के लोग भी लड़की के घर पहुंच गए, जिससे दोनों जगहों पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस का कहना है कि समीर को सुरक्षित बचाया गया है, हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं। I have decided to lodge a complaint and we are taking up an FIR and will investigate the case accordingly. And beside that, there has been 2-3 separate incidents. Regarding that also, we are taking up a case in the jurisdiction police station and we will investigate. We have spoken to the leaders of the community to which this girl belongs to, and they have also raised many apprehensions. And whatever is an offence, towards that effect, FIR is going to be registered and the case is going to be investigated. Sir, what is the main complaint of parent? Parents say that the girl has been harassed and some of the personal photographs and videographs of the girl have been used to blackmail the girl, threaten the girl, and accordingly she has been attempted to be misused by the boy in question. Sir, 2-3 days before in Dharwad and now in and earlier in another Bendigeri police town police station, similar incidents, young trainer involvement has been came forward. For the various different Whenever communities. such things come forward, I request everyone to come to police and report to such incidents or events openly without any hesitation, because this is gym is one place where people come to work out and maintain their health. If that platform is used by any person for creating any kind of nuisance or committing any kind of offense, it is not going to be acceptable. We are open to register any number of cases of any such misbehavior or harassment. Sir, as number of such cases are increasing, is police are going to take any promoter action to curb such incidents, which Already leads to the Already in each of our police station limits, we have conducted a meeting with the gym owners and also insisted them to put up CCTV and also to properly guide their staff not to be getting into any kind of ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।